इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है तो उस मोशन के कारण कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करंट जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो रीजन है दैट इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, पोटेंशियल वर्क और चार्ज के बीच में एक रिलेशनशिप पड़ी थी। एक्चुअली जो वर्क डन हुआ ड्यू टू द मोशन ऑफ क्यू चार्ज, दैट विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। due to charge motion. Now from here W equal to V into Q, W equal to V into Q. Also we know that Q equal to I into T, current into time. Therefore W equal to V I T. Since this work is electric energy, therefore E equal to W equal to V into Q equal to V I into T. So this is the formula for energy. The basic unit of this energy is joule. SI unit is joule. There are also another unit is kilojoule and one other unit is calorie. Calorie and kilocalorie. So 1 kilocalorie is equal to 4184 joules. So 1 gram calorie equal to 4.184 joule. This is the conversion formula from calorie to joules or from joules to calorie. You will use this conversion formula. Now the next topic is electric power. Electric power. So the electric power is defined as the rate of change of electric work. The rate of change of electric work. So the rate of work done is called power. Therefore the rate of electric work done or electric energy
is called electric power. Electric power. So P equal to W by T or E by T. Put the values of E. E equal to VIT divided by T. So this is nothing but VI. P equal to VI. And now from Ohm's law, V equal to IR. Therefore, P equal to I square R. This is another formula. And again from here, I equal to V by R. Put in this formula, P equal to V square by R. This is another formula. V square by R. So now unit, this is nothing but volt ampere. Volt ampere, or simply this is called as watt. So 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. What is the SI unit of power? Another unit is kilowatt hour. Kilowatt hour. This is industrial unit. Kilowatt hour, simply denoted as kWh. So 1 kilowatt hour equal to 1 kilowatt into 1 hour, or 1000 watt into 3600 seconds. In 1 kilowatt 1000 watt, and in 1 hour 3600 seconds. So 1000 watt into 3600 seconds. Now if we solve it, this will be 3.6 into 10 to the power 6 watt second, or this watt second is also called as joule. So this is 3.6 into 10 to the power 6 joules. So this conversion formula will also be used for numerical solving purposes. The very last topic of your syllabus is heating effect of current. Heating effect of current. Suppose here is a resistance, and this resistance is connected through a battery.
Here in the circuit a meter is connected. In parallel to the resistance a voltmeter is connected. Which is connected in series is the ammeter and connected in parallel is the voltmeter. Here some current is generating I. So according to the heating effect of current or sometimes Joule's heating effect of current, sometimes it is asked as Joule's heating effect of current. So you don't have any confusion. Joule's heating effect and heating effect both are the same topics. So when the current flows through a resistance, heat is produced. Some heat is produced. जब भी इस रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ भी करंट फ्लो होगी, ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या हम कहेंगे कि हीट जनरेट हो रही है. चलिए देखते हैं द जनरेशन ऑफ heat in a resistor or conductor when electricity flows through it it's called heating effect of current. Actually the heat generated is equal to the electrical energy that we have discussed in the previous lecture too. So H equal to VIT or I square R T. H equal to VIT or I square R T. This is in joules or H heat produced, H equal to I square RT divided by 4.18. This will becomes in calorie. So from here we can say that the heat produced is directly proportional to the square of current. Deductions: the heat produced is directly proportional to the square of करंट. यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हुई वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्क्वायर ऑफ करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हीट की वैल्यू बढ़ती जाएगी.
सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, हीट बढ़ती जाएगी। resistance of conductor. थर्ड पॉइंट, चार्ज के मोशन में जो टाइम लगा वो भी हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितने टाइम तक हम करंट फ्लो कराएंगे हीटिंग इफेक्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सो द हीट produced is directly proportional to the conduction time. Conduction time. Now where this heating effect is used, so we will discuss some applications of this heating effect. So heating effect principle is used in several electric appliances to prevent from the excess of heat. To design the electric appliances in such a manner that they produce a good amount of heat. So in electric appliances, second, usually we use it in electric filament bulbs also. Heating effect is used in electric filament bulb also. The current passed through the filament bulb and the bulb close. So in electric filament bulb. And third one is in domestic wiring. Usually it is used in electric fuse also. It is used in electric heater. So where we have to control the heat, the applications of heating effect of current usually applied. Thank you. The theoretical portion of this chapter is almost over. Now from the next lecture we will elaborate some problems, numerical problems. So if you have any problem regarding numericals, you can post in the comment box. Thank you. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस